नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को विद्यासागर क्लासेस नीट चैनल को समस्त को वेलकम। सो आज आम आउ गोटे नुआ टॉपिक रे आउ गोटे नुआ सेशन रे जॉइन हो जाइए जोड़ी की आम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जोड़ा कि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स मानक भितर गोटे नीट एग्जाम टाइम बोली से टॉपिक ऊपर डिस्कशन करबा तार किछिरा क्वेश्चंस अछि से क्वेश्चंस रो डिस्कशन करबा आ तार एनालिसिस मध्ये करबा एंड आई होप हमरो ए जति भी क्वेश्चंस अछि अराउंड 60 क्वेश्चंस अच्छे प्रॉपर एनालिसिस करके पढ़ा आउ वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस अच्छे अलग अलग लेवल रो क्वेश्चन अच्छे अलग अलग टाइप्स रो क्वेश्चन अच्छे या द्वारा हम कौन ना तुम ओवरऑली सब गुड़ाक एका संगे कवर हो जाए ओवरऑल बेसिस रे सब गुड़ाक एका संगे कवर हो जाए तो से बोली बिना देरी करी वी विल स्टार्ट विद द वीडियो है वी विल स्टार्ट विद द वीडियो एक्टिव पार्टिसिपेशन तुम मैंने भी देखेबा निहाती जरूरी एंड अकॉर्डिंगली तापर हम कौन करबा ना प्रति क्वेश्चंस को एनालाइज कर पढ़िबा हैला। सो यस ए क्यूआर रे समस्त स्कैन करि देबे सो दैट बायोबाइट्स विथ संजना मैम एडा होचे मोर टेलीग्राम चैनल ए क्लास सरू मु तुमको सब गुड़ाक ये जो माने हमर पीडीएफ फाइल अछि कि जा अछि सब गुड़ाक मु साइड ए चैनल रे अपलोड कर देबी जोड़ा द्वारा कि तुमरो रिवीजन करिया रे भी हेल्पफुल हो आउ नॉट ओनली दिस आजिरो क्लास पई बोली नुहे अपकमिंग क्लासेस पई बोली मते तुम पई बोली हेल्पफुल हो आउ जति क्लासेस सब पूर्वर हो जाई से क्लासेस गुड़ा पई मते तुम पई हेल्पफुल हो बिकॉज़ से क्लासेस गुड़ा सब हमरो जति भी सब पीडीएफ फाइल्स हे गला जति भी सब मटेरियल्स हे गला सब अवेलेबल अछि चैनल सब अवेलेबल अछि टेलीग्राम चैनल रे तो यू कैन फटाफट गो थ्रू इट जोड़ा रे कि तुम पई बोली हेल्पफुल हो संगे संगे फास्ट रिवीजन करिया पई बोली हेल्पफुल हो हैला। तो स्टार्ट करिवा वीडियो स्टार्ट करिवा क्वेश्चंस हैला जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके चलो स्टार्ट करिवा। क्वेश्चन नंबर 1 Question number 1. In Peritima postuma, gaseous exchange occurs mainly through highly vascularized parapodia projecting laterally from the body segments, thin moist integument richly supplied with blood capillaries, tracheal tubes opening externally through paired spiracles, book lungs arranged in chamber-like abdominal sacs. Chamber-like abdominal sacs. है फर्स्ट तो फेरेटिमा पोस्टुमा कौन फेरेटिमा पोस्टुमा कौन फेरेटिमा पोस्टुमा होचंती हमर the members of the family phylum Annelida. These are the members of the phylum Annelida. और ए phylum रो ग्रुप रे हमें देखुचे ए phylum रो ग्रुप रे हमें देखुचे that मेटामेरिज्म हमर फर्स्ट शो होच हैला मेटामेरिज्म हमर फर्स्ट शो होच तो फेरेटिमा पोस्टुमा की है ये है अर्थवर्म कॉमन नेम है अर्थवर्म है Annelida फाइलम को बिलोंग करूची आउ मेटामेरिज्म माने ट्रू सेगमेंटेशन इज फर्स्ट शोन इन दिस फाइलम हैला आउ सेमानंगर जदी देखिबा नेफ्रिडिया होची एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ता जोडा कि ऑस्मो रेगुलेशन रे मध्ये हेल्प करची तो ता विषय जदी हम किछि स्टेटमेंट्स लिखिबा ताले ऑस्मो रेगुलेशन and excretion है osmoregulation and excretion this takes place by nephridia है अच्छा
highly vascularized parapodia projecting laterally from the body segments एडा केवल एडा केवल हमरो annelida phylum रो गोटे मेंबर रे ही देखा जाउची सेडा हला नेरिस जोड़ा को aquatic annelid बोले मध्ये कहा जाउची aquatic annelid बोले मध्ये कहा जाउची सेमानकर lateral appendages अछि जोड़ा को parapodia कहा गला सेडा द्वारा सेमानकर respiration है बाकी normal peritima postumare this is thin moist integument richly supplied with blood capillaries है ना richly supplied with blood capillaries है ना thin moist integuments which are richly supplied with blood capillaries एडा हि जबा हमर करेक्ट आंसर आ गोटे जदि कथा रहिला हमर annelida phylum भितर तीनटा मेंबर अछंती हैला तीनटा मेंबर अछंती कोन कोन मेंबर अछंती गोटे तो हैला पेरिटिमा जोड़ा भी अर्थवर्म कहली आ गोटे हैला हिरुडिनेरिया लीच आ गोटे हैला नेरिस aquatic annelid aquatic annelid ता जोड़ा हैला ए भितरु हमर मोनोइशियस की आ डाइशियस की मोनोइशियस की और डाइशियस की डाइशियस माने हला द मेंबर्स ऑफ द फैमिली माने मेल और फीमेल गोटे ही बॉडी रे प्रेजेंट मोनोइशियस माने डाइशियस माने मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी रे प्रेजेंट तमाने पेरिटिमा और हिरुडिनेरिया हला ए दीना अर्थवर्म और लीच ए माने होचंदी मोनोइशियस माने मेल और फीमेल गोटे ही बॉडी रे प्रेजेंट अछि while neris जोड़ा कि aquatic annelid ता एडा होची डाइशियस आ जदि annelida phylum बे आ किछि कथा हबे बोली कहले से मानकर कोन रहउची ए मेंबर रो हमर मेटामोरिज्म आरंभ हो गलेनी मेटामोरिज्म शो करचंदी organ system level of organization देखउचंदी आउ सिलोमेट ए कंडीशन शो करछ हैला तो हमर क्वेश्चन नंबर 1 रो ऑप्शन नंबर 2 हे जिवो करेक्ट आंसर ट्रैकियल ट्यूब्स ओपनिंग एक्सटर्नली थ्रू द पेयर्ड स्पाइरकल्स एडा का पे हे जिवो एडा हे जिवो कॉकरोच पे करेक्ट स्टेटमेंट पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना जोड़ा कि फाइलम ऑर्थ्रोपोडा को बिलोंग करछ हैला बुक लंग्स अरेंज्ड इन चैम्बर लाइक एब्डोमिनल सैक बुक लंग्स मध्ये हमर सही ऑर्थ्रोपोडा फाइलम रे ही बिलोंग करू ऑर्थ्रोपोडा फाइलम रो अछि जो मेंबर ता अराक्निडा जोड़ा रे हमर स्कॉर्पियंस क्रैब्स स्पाइडर एमाने आसुचंती सेम मेंबर ऑफ द फैमिली बुक लंग्स द्वारा रेस्पिरेशन ठीक अछि देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 gills as respiratory organs are characteristically associated with gills काहे यूज होची हमर रेस्पिरेटरी ऑर्गन बरा efficient gaseous exchange in aquatic organisms prevention of water loss during terrestrial life atmospheric oxygen absorption through the alveolar membranes transport of gases through hemophilic circulation only gills as a respiratory organ is used by the aquatic organisms for efficient gases exchange. Option number A,
efficient gaseous exchange aquatic organism रे हेबा पई बोली सेमानकर gills use होची aquatic as a respiratory structure. gills कोडर कोडर हमर यूज होची गोटे तो abundantly pisces fishes माने देखौचंदी कॉटेज मानक भीतर जदी देखिबा आ amphibians माने early stage of the life. Early stage of the life माने जतरा tadpole stage रे थाउचन न सतबेले से माने gills रे tadpole stage रे थिला बेलको gills रे respiration होची. Done. Babani A. So, next question 3. The right lung of human differs from the left lung because it contains two lobes due to cardiac notch present, possesses three lobes separated by fissures, lacks pleural membrane covering the pleural surface, pulmonary surface, is considerably smaller owing to hepatic displacement. Right lung now, left lung, how is it different from each other? जदि हमें lungs structure देखिबा, we have two lungs, left side रे गोटे और right side रे गोटे, जोड़ा कि हमर wind pipe सहित attach हेगी अछि, wind pipe सहित attach हेगी अछि, ହେଲା wind pipe सहित attach हेगी अछि बोली कहले ए टाइप रो किछ रहइबा हमर ये हला राइट लंग, ये हला लेफ्ट लंग, एडी लेफ्ट लंग रे ना एडी अछि हमर कार्डियक नॉच, एडी अछि कार्डियक नॉच हला व्हाई बिकॉज़ एडी हार्ट ता लोकेटेड अछि, एडी हार्ट ता लोकेटेड अछि. देन अच्छा एबे देखिबा लेफ्ट लंग रे कोन कोन अछि, लेफ्ट लंग रे एडा हला सुपीरियर लोब आउ एडा हला इंफीरियर लोब. से जो फिशर रे डिवाइडेड हेगी अछि सेडा कहला हॉरिजॉन्टल फिशर, हॉरिजॉन्टल फिशर है ना. एबे आसा नेक्स्ट राइट लंग रे देखिया हो गले एडा हला हमर सुपीरियर लोब, ये हला मिडिल लोब और ये है ना इंफीरियर लोब, इंफीरियर लोब ये सेपरेट हो जे हमरा हॉरिजॉन्टल फिशर रे आ गोटे हला ये हला हमरा ऑब्लिक फिशर, ऑब्लिक फिशर हला तमाने तामाने होची कि हमर ए तीनटा लोब हमर राइट लंग्स रे हमर तीनटा लोब अछि और लेफ्ट लंग्स रे दीटा लोब अछि. राइट लंग्स रे तीनटा लोब अछि और लेफ्ट लंग रे दीटा लोब अछि. त माने राइट लंग रे हमर जो ह्यूमंस रो दे डिफर फ्रॉम द लेफ्ट लंग इन बिकॉज़ it possesses three lobes separated by fissures. Hela separated by fissures. Anand Gupta, kindly don't spam. If you don't know the language, then please leave the chat. Okay, if you don't understand the language then you can kindly leave the chat. ठीक है जी, you can leave, don't spam. next तो ये गला हमर गोटे कोन लंग्स स्ट्रक्चर तार जदि हमें देखिबा तार जदि हमें देखिबा हला केमिति हमर रहउची externally how is it covered hela tahale ye hela amar kono these are the pleural membrane, these are the pleural membrane hela a pleural membrane di prakar rochi gote hela parietal pleura a gote hela visceral pleura. a pleural membrane और lungs भितरे hela lungs भितरे हमर कोन रोचंदी pleural cavity रोची, pleural cavity रोची से भितरे pleural fluid रोची, से भितरे pleural fluid रोची अब से fluid ता help कोन करची, it helps in reducing है ना it helps in reducing the collapse of the lungs है ना और to reduce the friction among the layers of the lungs है ना.
to reduce friction. तो ये गला हमर कोन ये गला हमर right lung differ from left lung. How is it different? It possesses 3 lobes separated by fissures. 3 lobes it is separate or and is separated by fissures. Next question. 4. The exchange of respiratory gases in lungs occurs mainly through cartilaginous rings surrounding the primary bronchi, alveolar epithelium and pulmonary capillary membrane, smooth muscular lining of the tracheal passage, visceral pleura enclosing the thoracic cavity internally. है internally. ठीक तो एटा को कौन करा जीवो respiratory gases बा respiratory membrane कथा पचाउची हैला respiratory membrane कथा पचाउची एइडी हम देखुचे ये हला हमर alveoli alveoli रो ये हला हमर simple squamous epithelium. Simple squamous epithelium मेरी gases exchange हबो मोर blood vessel भितरे blood vessel संगे gases exchange हबो हैला तो एडा कोन हैला एडा हैला alveoli एडा हैला blood vessel ये हैला blood vessel आ ए दीटा भितरे हमें कोन देखुचे हैला ए दीटा कोन देखुचे हमें एडा हैला alveoli रो epithelium हैला एडा हैला alveoli रो epithelium जोड़ा को कोन कुआ जाउची it is made up of simple squamous epithelium. Simple squamous epithelium of alveoli हैला और एडा को कोन कुआ जाउची now this is the endothelium of blood vessel अब ए भितरे जो सब्सटेंस प्रेजेंट अछि एडा को जाउची एस basement substance or basement membrane एडा बोले को जाउची अब ए तीनटा लेयर देगिरी हमर गैसेस एक्सचेंज होची हैला फर्स्ट लेयर हैला simple squamous epithelium of the alveoli, second layer हैला basement membrane or basement substance, third layer हैला endothelium of the blood vessel. ए तीनटा जगह मिसेगिरी हमर को जाउची as respiratory membrane. And it is less than 1 mm. हैला it should be less than 1 mm माने जत्ते पतला हबो जत्ते वाइडर सरफेस एरिया हबो जत्ते मॉइस्ट रहबो मोर सरफेस ता सेते बेटर गैसेस एक्सचेंज हे हैला सेते बेटर गैसेस एक्सचेंज हे परिबो तो सेते पे बोली एरा होची मोर जो भी गैस टाइप एक्सचेंज हबो ना माने अगर ऑक्सीजन alveoli रो आसिला ब्लड वेसल तो तीनटा लेयर दे गैस फर्स्ट है simple squamous epithelium of alveoli, second है basement membrane और third है endothelium of the blood vessel. आउ तारो उल्टाडा हैला कोन तारो उल्टाडा हैला एटा CO सिमिलरली एडो एडी गले मते से लेयर दे गिरी तो एडी alveolar epithelium and pulmonary capillary membrane हैला एडा हे जो हमरो करेक्ट आंसर then next question number 5. The pleural fluid present between the pleural membrane functions mainly in just कथा हैला में आबे सर हैला कोन increasing friction during the expansion of lungs, increase करबनी friction को increase करा जायनी हैला facilitating smooth respiratory movements of the lungs, producing mucus for humidification of the inspired air, carrying oxygen directly into the pulmonary alveoli. कौन हम पढ़ू 5 टा जीवा हमारा B हैला B facilitating smooth respiratory movement of the lungs हैला smooth respiratory movement of the lungs. आउ तांगर main function हैला कोन जे main function would be to reduce friction during
the expansion and relaxation of lungs within the walls of lungs and between lung wall and alveolar membrane. Lung wall and alveolar membrane. Ayola? B. Correct. Next question. 6. The trachea remain patent during breathing because of circular smooth muscles surrounding respiratory passage, incomplete C-shaped cartilaginous rings supporting airway, stratified glandular epithelium secreting surfactant, dense connective tissue and enclosing bronchiolar lumen. Hela, तो एडी हमर आंसर हे जिवो कोन सी हला ट्रैकिया बोली कहले से विंड पाइप कथा हमें होचे ट्रैकिया माने विंड पाइप कथा होचे जोठी की हमर एयर ता जो आसुची से हमर जो पैसेज देगी आसुची सेटा विंड पाइप पर ट्रैकिया को आ जाउची आ एठी हमर दे आर enclosed by C-shaped incomplete cartilaginous rings. I say just C-shaped incomplete cartilaginous rings. These are known as C-shaped incomplete cartilaginous rings made of which type of cartilage? It is made of hyaline cartilage. It is made of hyaline cartilage. ଆଉ ତାର କାମ କଣ ତାର କାମ କଣ କରୁଛନ୍ତି how is it working to prevent the collapse of trachea collapse हबार बंचिया पई बोली आमी trachea रे C shaped incomplete cartilaginous rings गुला को सब install कर लो. Question number 7. Diffusion of oxygen from alveoli into the blood occurs because partial pressure of oxygen is higher in alveoli than deoxygenated blood. Carbon dioxide concentration exceeds the nitrogen concentration in plasma. Hemoglobin actively pumps oxygen against the concentration gradient. Pulmonary arteries possess lower osmotic pressure than the alveoli. Diffusion of oxygen from alveoli into the blood occurs because हमें कहो जे कि ए जो गैसेस एक्सचेंज कथा हेलेनी alveoli आ ब्लड वेसल भितरे हला एडी जो हमर गैस एक्सचेंज होची एडा हमर डिफ्यूजन द्वारा होची डिफ्यूजन रो माने कोन द ट्रांसफर ऑफ गैस फ्रॉम अ रीजन ऑफ higher concentration to a region of lower concentration. To a region of lower concentration. ठीक अछि एडा हेला हमर नॉर्मल डिफ्यूजन काहे कि एडा हमर अल्वेओली रो ब्लड को जाउची ता माने होची कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रेशर ग्रेडियंट या ही दिबो ठीक अछि partial pressure of oxygen is higher in alveoli than deoxygenated blood. Alveoli रे partial pressure of oxygen ला higher थाई और alveoli रे partial pressure of oxygen केते रहउची alveoli रे partial pressure of oxygen it is 104 mm H हैला 104 mm H 8 से deoxygenated blood रे तो partial pressure of oxygen is 40 mm Hg तो लोअर कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन वास्ते बनी आती है ना हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन वास्ते बनी आती ठीक हां भवानी ठीक है ना नेक्स्ट 8 which of the following correctly represent approximate partial pressure of oxygen in the alveoli just a bit discussion कर लो है ना just a visual विषय डिस्कशन करी लेही ऑक्सीजन रो partial pressure alveoli it is 104 mm Hg जदि आमे देखिबा तीनटा जिंस हला ना तीनटा जिंस कहूची मु पार्शियल प्रेशर फर्स्ट कोन फर्स्ट तो पार्शियल प्रेशर कोन एडा आगो देखिबा पार्शियल प्रेशर इज द
the pressure of individual gas in a mixture of gases. The pressure of individual gas in a mixture of gases. हम environment रे गुड़ाई प्रकार gases present अच्छी गुड़ाई प्रकार एयर भितर गुड़ाई प्रकार आमर gases present अच्छी से भितर जदि मु गोटे गैस रो प्रेशर टाको मु मेजर करियो चाहिबी सेटा को मु पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस बोली कहै जाउची मु एबे मु सेमिदी ऑक्सीजन रो पार्शियल प्रेशर भी काढी परिबी कार्बन डाइऑक्साइड रो भी काढी परिबी नाइट्रोजन रो भी काढी परिबी जो थरा इच्छा अछि मते मु सेही थरा काढी परिबी केमिदी काढी परिबी पार्शियल प्रेशर देखो जदि फॉर एग्जांपल हमर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट इज ऑलवेज कांस्टेंट सब बोले सेटा कांस्टेंट है आ वैल्यू केते एटमॉस्फेरिक प्रेशर केते रहउची 760 mmHg हला 760 mmHg इडा हला गोटे कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमर एडा केबे चेंज होबो हला एटमॉस्फेयर रे ऑक्सीजन रो मात्रा केते अछि ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 21% 21% रे हमर ऑक्सीजन प्रेजेंट अछि तो एबे 21% ऑक्सीजन रो पार्शियल प्रेशर केते हमर एटमॉस्फेरिक जितो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mmHg ताला में एमिदी प्रेशर कर परिबा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 21% ऑफ 760 mmHg which is equals to 21/100 into 760 mmHg जोटा कि हमर किछि पॉइंट रे वैल्यू आसीबो हला कि जोटा पॉइंट रे वैल्यू आसीबो बट हमें सेडा कोन करछे 159 राउंड ऑफ करी एडा हेला हमर करेक्ट हला एडा हेला हमर करेक्ट स्टेटमेंट तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर एबे कहबी तीनटा जिंस कोन ना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर केते partial pressure of oxygen in alveoli ये कहते हैं a partial pressure of oxygen in oxygenated blood सी कहते हैं ए तीनटा वैल्यू जदी देखिबा ताले गोटे तो हमें एटमॉस्फेयर रो पार्शियल प्रेशर हमें काढी ले जस्ट हला इट इज 159 mmHg ठीक अछि alveoli रो पार्शियल प्रेशर एडी देखिले 104 mmHg आओ partial pressure of oxygen in oxygenated blood देखिले it is 95 mmHg अच्छा एडी गोटे जिंसडे मार्क करो एडी गोटे जिंसडे मार्क करला बडा रहउची जे काहे कि हमर 159 टू 104 104 टू 95 हमें जते बडे इनहेल को एटमॉस्फेयर 159 रिप्रेजेंट अछि alveoli जाय गला को 104 हे जाउची तापर ब्लड रे मिसिला आडू 95 mmHg हे जाउची काहे कि जति कि अमाउंट बा जति कि प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमें इनहेल कला आडू नेकी जाइतिले सति कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन काहे हमर यूटिलाइज होउनी व्हाई इज इट नॉट यूज्ड हला बिकॉज़ कोन होउची ना ह्यूमिडिफिकेशन है ना ह्यूमिडिफिकेशन कोन ह्यूमिडिफिकेशन रो माने हला कि आमे जतले एटमॉस्फेयर रो एयर टा को इनहेल करछे तो हमरो रेस्पिरेटरी कैविटी दे ट्रैक्ट देगिरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट देगिरी माने नॉस्ट्रिल नेजल कैविटी ट्रैकिया ब्रोंकियल प्राइमरी ब्रोंकी सेकेंडरी ब्रोंकी टर्शियरी ब्रोंकी सब हे alveoli जाय गला आडको जो सेल्स उडा हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रेजेंट अछि ना से माने किछरा हमर अमाउंट ऑफ गैस यूज कर दो चंती तापरे आ बाकी जति की रहिला हमर alveoli जाय जाउची जोडा कि 104 mmHg रे जाउची बोली हमें कहउचे तापर पुणी ओथे गैसेस एक्सचेंज होची हमर alveolar membrane संगे रही गैसेस एक्सचेंज होची गैसेस एक्सचेंज होला परे तापर जो गैस रो जो हमर गोटे जगह आउडी जा पास ही जाउची रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन देग्री जते बले से पास ही जाउची तोळे मध्ये किछडा अमाउंट ऑफ एयर किछडा अमाउंट ऑफ प्रेशर हमर यूज ही जाउची एंड आफ्टर व्हिच ऑक्सीजनेटेड ब्लड रे हमर केवल 95 mmHg रो ब्लड ही माने ऑक्सीजन ही प्रेजेंट होची हला सो ये हेला हमर फुल कंप्लीट डाटा हला ये हेला फुल कंप्लीट डाटा देन हेला क्वेश्चन नंबर 9 carbon dioxide diffuses from tissues into blood because blood plasma possesses greater oxygen affinity than tissues. Partial pressure of carbon dioxide is higher in tissues. Hemoglobin reversibly binds carbon dioxide in alveoli.
Nitrogen concentration decreases significantly. Carbon dioxide diffuses from tissues into the blood because it is partial pressure of carbon dioxide is higher in the tissues. ହେଲା ଆମର କ'ଣ କେତେବେଳେ ହଉଛି alveoli ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ inhale କରୁଛେ ଅକ୍ସିଜେନ ର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ଅଧିକା ଥାଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ ର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ଅଧିକା ଥାଉଛି ଆଉ ବ୍ଲଡ ଭେସେଲ ରେ ଅକ୍ସିଜେନ ର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ କମ ଥାଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ଅଧିକା ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ କମ ହବ ଆଉ ଏଇଠି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ଅଧିକା ହବ ତ ଅକ୍ସିଜେନ diffuses from alveoli to blood tissue ଏମିତି ହେଲା ଏମିତି ଆଉ carbon dioxide diffuses from blood tissues to alveoli ଆମର ଏଇଟା ହେଲା ଓଲଟା ହଉଛି ଠିକ ଅଛି ଓଲଟା ହଉଛି ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ରିଜନ ପାର୍शिଆଲ ପ୍ରେସର ଯୋଉଠି ଅଧିକା ଥିବ ସେଇଠୁ ଆଉ ଯୋଉଠି କମ ଥିବ ସେଇଠିକି ଯିବ ନା हायर कंसंट्रेशन ରୁ लोअर कंसंट्रेशन को ଯିବ सिंपल ହେଲା सिंपल क्वेश्चन नंबर 10 the majority of the oxygen in human blood is transported as dissolved directly within the plasma water molecules bound reversibly with hemoglobin as oxyhemoglobin combined chemically with bicarbonate ion in erythrocytes attach irreversibly to plasma globulin proteins However, C, D, majority of the oxygen the majority केमिति ट्रांसफर होची ऑक्सीहेमोग्लोबिन फॉर्म करछबा ऑक्सीहेमोग्लोबिन फॉर्म करूजीबा ऑक्सीजन को पचाइछ कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन को पचाइछ तो हम ब्लड वेसल रे आरबीसी अछि ब्लड प्लाज्मा मध्ये अछि ऑक्सीजन तरह ट्रैवल करिया आसुची 3% is dissolved in the blood plasma it is dissolved in the blood plasma आउ जो 97 अछि 97% बाकी अछि सेइरा हमर कोन करबो ना हीमोग्लोबिन संगे बाउंड करिगिरी ଗୋଟେ कंपोनेंट बनेबो HbO2 रिवर्सिबली सेरा को आगला HbO2 which is oxyhemoglobin हैला oxyhemoglobin ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कथा पचाइछि ना ऑक्सीजन मेजॉरिटी हमर oxyhemoglobin फॉर्म करी ही जाउछ हैला oxyhemoglobin फॉर्म करी ही जाउछ 11 most carbon dioxide is transported in the blood in the form of carbaminohemoglobin associated with protein chains dissolved gas within the pulmonary plasma exclusively bicarbonate ion generated through hydration reactions carbonic acid remaining undissociated in the erythrocytes एरा को है 11 द सी एबे सी हो ठीक अछि ना हैला एबे बाइकार्बोनेट आयंस हिसाब रे से माने ट्रैवल करने कार्बन डाइऑक्साइड ता मेजरली हमर बाइकार्बोनेट हिसाब रे
ट्रैवल करूची एटा जदी देखिबा हमें आरबीसी रो स्ट्रक्चर हैला कार्बन डाइऑक्साइड आसिला कार्बन डाइऑक्साइड रो 7% is dissolved in the blood plasma हैला आउ केते रहला आउ रहला 23% ये हमर हीमोग्लोबिन संगे मिसी गिरी से गोटे कंपोनेंट रिलीज करछि HbCO2 बोली कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स हैला आउ आउ जो 70% रे ट्रैवल करूची सी हमर H2O संगे बाइंड कर जाउची कोन करला सी हमर एडी H2O संगे बाइंड करिगिरी कार्बोनिक एनहाइड्रेस गोटे एंजाइम रे अछि कार्बोनिक एनहाइड्रेस the reaction effect H2CO3 which is carbonic acid सेरा हमर फॉर्म कर दोछि हैला सेरा हमर फॉर्म कर दोछि तबरे पुणी ये डिसोसिएट होछि into by the help of carbonic anhydrase आउ पुणी डिसोसिएट हेगिरी H plus आउ HCO3 minus बनौछि हैला HCO3 minus बनौछि HCO3 minus जो बनौछि ये अधिका टाइम पे बोली आरबीसी रे रही परिबोनी हैला तो ये कोन होछि ये हमर बाहरी आछुछि आ ता बदल रे गोटे क्लोराइड आयन डे एंटर करछि and this all takes place by a bicarbonate chloride exchanger bicarbonate chloride exchanger अब ये जो फेनोमेना एडा को कहा जाउची as chloride shift कहा जाउची या फिर एडा को हैमबर्गर्स फेनोमेना बोली मध्ये कहा जाउची हैला हैमबर्गर्स फेनोमेना बोली मध्ये कहा जाउची तो ये हे गेला हमर कोन ना ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैला ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ठीक अछि हे गेला डन अच्छा तो तापे ही बोली सेति बोली से हमर केमिति कार्बन डाइऑक्साइड ता केमिति ट्रैवल करछि कहले इट इज ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट आयंस जनरेटेड थ्रू द हाइड्रेशन रिएक्शन बोली कहले से H2O संगे बाइंड करला पर जो क्वेश्चन माने जो रिएक्शन दा बनेला तापरे बाइकार्बोनेट को से रिलीज करला एडा हे गेला हमर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट ऑफ 70% से हमर बाइकार्बोनेट आयन हिसाब से ट्रैवल करूची सेति में बोली एडा हमर कोन होय होची ना मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड हमर एज बाइकार्बोनेट आयंस रिलीज होची बॉडी रो हे गेला नेक्स्ट क्वेश्चन 12 the enzyme carbonic anhydrase present in the erythrocyte catalyzes oxygen binding with ferrous component of our hemoglobin conversion between carbon dioxide and carbonic acid oxidation of glucose during aerobic respiration hydrolysis of fibrinogen during the clot formation हैला during the clot formation नीट रे 671 स्कोर होतला पुणी टफ आसिले कोन करबो किछ असुविधा नै राधे तमरो 671 स्कोर करि परछ जदी बोली कहले एबे मते बेटर स्कोर करबो तबे टफ आसिले ले मते तमे 600 तो स्कोर करि परिबो ना नै 600 तो स्कोर करि परिबो ना नै जदी पेपर टफ आसुची खाली तम पय बोल तो टफ आसीबनी समस्तन पय बोली टफ समस्तन पय टफ आसिला बेलु गुड कट ऑफ हमर निहाती तळ बुझी हला सेति पय बोली व्यस्त होनी प्रिपरेशन करू हला बी यस कन्वर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बनिक एसिड जोटा कि हम जस्ट इनिशियल रिएक्शंस रे देखिले कोन कार्बन डाइऑक्साइड हमर हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन करिगिरी कार्बनिक एनहाइड्रेज रो हेल्प रे H2CO3 बनेबा पुनी हमर से कार्बनिक एनहाइड्रेज रो हेल्प रे हला H plus plus HCO3 minus एडी बनेबा हला एडी बनेबा एडी कार्बन डाइऑक्साइड रो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एटा को हमर कार्बनिक एसिड बोली कह जाय छै कार्बनिक एसिड बोली कह जाय छै
है ना ये हमर फॉर्म करछे एटा ऑप्शन नंबर बी इज बोते नाइस 13 Bohr effect refers to increased oxygen affinity of hemoglobin at high pH, reduced binding of oxygen with hemoglobin due to elevated carbon dioxide, permanent dissociation of hemoglobin into the globin chains, and enhanced nitrogen diffuses across the alveolar membrane. कौन होगा 13 नंबर क्वेश्चन देखो हमर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कथा जदी बुझिबा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कथा जदी बुझिबा हाउ इट डज इट वर्क्स हला हाउ डज इट वर्क्स ये होची हमर कर्वटा जोडी की हमर ग्राफटा ए टाइप रो हला एडा हला पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाउ ये हला हमर affinity of hemoglobin to bind with oxygen affinity of hemoglobin to bind with oxygen तो एबे कोन होची हमर ना बोर इफेक्ट रे कोन हबो ना increase in CO2 or decrease in pH reduces the affinity of hemoglobin for oxygen काहेकि एटा को जो स्टेटमेंट ता काहेकि ना हम जानचे गैस रा एफिनिटी हमर CO रो अधिक सबुठ तापरे CO2 तापरे ऑक्सीजन तो बोर इफेक्ट रे कहला कोन ना कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जदी अधिक आइ जाउची कार्बन डाइऑक्साइड जो कंसंट्रेशन जदी अधिक आइ जाउची हमर ब्लड रे ताहले हमर कोन होई जिवो एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन कमी जिवो नियादी काहेकि ना ग्रेटर एफिनिटी हमर कार्बन डाइऑक्साइड पे बोली देखौची मोस्ट एफिनिटी हमर कार्बन मोनोऑक्साइड पे बोली देखौची एटा हला बोर हला एटा हला बोर इफेक्ट आ एटा जनरली कोडी देखिया मिलुची कहलो टिश्यूज रे देखिया मिलुची ना टिश्यूज रे जेतले कार्बन डाइऑक्साइड रो कंसंट्रेशन अधिक थाउची यूज होला पर तो ऑक्सीजन पे एफिनिटी कमी जाउची टिश्यूज में ऑक्सीजन संगे बाइंड कर दोचन टिश्यूज रे जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट थाउची एबा से हाल्डेन इफेक्ट deoxygenated hemoglobin has greater affinity for CO2 than oxygenated hemoglobin. एटा कौन कहला एटा कहवा अनुसार कि हीमोग्लोबिन रे जदी हमर ऑक्सीजन अटैच हे नथिबो हीमोग्लोबिन रे हमर जदी ऑक्सीजन प्रेजेंट नथिबो ताले से हीमोग्लोबिन रो एफिनिटी रा कार्बन डाइऑक्साइड पे बोली अधिक था आउ जो हीमोग्लोबिन रे ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन रा प्रेजेंट थिबो ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन रे कार्बन डाइऑक्साइड रो एफिनिटी टुवर्ड्स दैट हीमोग्लोबिन सेडा हमर कम है ना सेडा हमर कम है तो ये गेला हमर एडा हमर जनरली लंग्स रे एडा यूज होछ तो एडी कोन हैला कर्वटा हमर दी प्रकार हे परबो बोर इफेक्ट रे कार्बन डाइऑक्साइड ता बढ़िले एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन ता कमी जाउची ना तो ये हमर धीरे धीरे एफिनिटी कमी जी हैला अब एडा भी हमर बोर इफेक्ट को जाउची अब बोर इफेक्ट रो रिजल्ट रे हमर कर्वटा राइट शिफ्ट पड़ोची अब एडा टिश्यूज रे काम करची हैला टिश्यूज रे काम करची तार उल्टाटा होची हमर एटा जोड़ा हैला कोन एटा को गला हाल्डेन इफेक्ट जोठी की ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाइन बोली ऑक्सीजन रा एफिनिटीटा सबुडु अधिक था हैला अब एटा हमर लेफ्ट शिफ्ट कॉज करूची जोड़ा हमर लंग्स रे अकर होची लंग्स रा अकर होची हैला प्रणाम पदला तो ऑप्शन नंबर 8 कोन हे जिवो reduced binding of oxygen with the hemoglobin due to elevated carbon dioxide level बढ़ी गला जो हमरो ऑक्सीजन पई बोली एफिनिटी कमी जाउची हीमोग्लोबिन रो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी बाल ऑक्सीजन पई बोली एफिनिटी रा कमी जाउची हे गला डन क्वेश्चन नंबर 13 तापर आसे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14
The volume of air inspired or expired during normal quiet breathing is termed as normal quiet breathing. प्रणाम प्रणाम सनातन देख ये हूँ आमर कौन ग्राफटा जदि बनवा ए टाइप ग्राफटा बनाऊे जोटी की एटा डिनोट कर नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन है एटा है नॉर्मल ब्रीदिंग ये नॉर्मल ब्रीदिंग अब नॉर्मल ब्रीदिंग टाको आम टाइडल वॉल्यूम बोली कहू टाइडल वॉल्यूम केते रेंज कर 500 ml रे रेंज कर 500 ml रे रेंज कर अच्छा जदि फोर्स्ड इंस्पिरेशन करा होची फोर्स्ड इंस्पिरेशन देन कौन होची फोर्स्ड इंस्पिरेशन करले हमर किछि अमाउंट ऑफ एयर हमें फोर्सफुली इंस्पायर करि पाउचे सेटा कहला आईआरवी और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जोटा कि हमर 2500 रु 3000 ml जाय रेंज कर 2500 रु 3000 ml जाय रेंज कर सेव एयर टाइ हम जतले फोर्सफुली एक्सपायर करछे है फोर्सफुली एक्सपायर करछे एरा कहा जाउची ईआरवी है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जोटा कि हमर केते 1000 रु 1100 ml जाय रेंज कर 1000 रु 1100 ml जाय रेंज कर है आउ आउ जदि एबे कैपेसिटीज कथा देखि आरंभ करबा ताले एई ऊपर दिरा मिसेगिरी माने आईआरवी आउ टीवी मिसेगिरी एरा कहा जाउची इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और आईसी है तापर एडा मिसेगिरी ईआरवी प्लस टीवी एडा मिसेगिरी हमर होची एक्सपिरेटरी कैपेसिटी या फिर एडा कहा जाउची ईसी टोटल ना जते बड़े एडी मिसेबा एडा कहा गला वाइटल कैपेसिटी या फिर वीसी है अच्छा आउ ना किछि अमाउंट ऑफ एयर हमर एठी किछि अमाउंट ऑफ एयर एडी लंग्स रे ही रहि जाउची इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन एतिकी वॉल्यूम ऑफ एयर हमर बॉडी रु माने हमर लंग्स रु रिलीज होउनी हैला एडा कहला कोन रेसिडुअल वॉल्यूम हैला दिस वॉल्यूम of air is not released from the lungs even after forceful expiration why to prevent the collapse of lungs हैला एडा कहला कोन एडा कहला एज रेसिडुअल वॉल्यूम हैला एडा कहला एज रेसिडुअल वॉल्यूम एबे आसो हम जदी टोटल कैपेसिटी को देखिबा एडु एतिकी तो हमर वाइटल कैपेसिटी हैला एडु एतिकी पूरा हे गेला हमर कोन ना टोटल लंग कैपेसिटी और टीएलसी बोली कहा जाउची टोटल लंग कैपेसिटी बोली कहले आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी एरा मिसे गिरा हमरो टीएलसी हे गेल हैला आ आईआरवी टीवी आरवी मिसे गिरा आईआरवी टीवी ईआरवी रो माने कोन वाइटल कैपेसिटी प्लस आरवी तार माने हैला टीएलसी हैला तार माने हैला टीएलसी तो एडी हे गेला हमरो सबु जहा जहा सब हमरो इंस्पिरेटरी नहीं तो respiratory volumes and capacities
रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज विषय रे हमरो एठी पूरा पूरी कंटेंट ता मिली गला हैला। तो आईडी आंसर हे जबो कोन वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल क्वाइट ब्रीथिंग। नॉर्मल ब्रीथिंग दा होची हमरो कोन टाइडल वॉल्यूम हैला, टाइडल वॉल्यूम। अच्छा आ गोटे जिंस मतलब टाइडल वॉल्यूम रे रहला कोन हमरो एटा ना टाइडल वॉल्यूम रे हमें कहले नॉर्मल ब्रीथिंग रे हमें 500 ml ऑफ गैस इनहेल और एक्सहेल करछे किंतु कोन 500 ml ऑफ गैस हमरो गैसेस एक्सचेंज रे इन्वॉल्व होची। हमें कहले कि हमर प्रेशर ग्रेडियंट कमी जाउची जेमिति जेमिति हमें टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द लंग्स को मूव करछे हैला। त माने कंसंट्रेट माने ये ग्रेडियंट कमी जाउची बोली कहले प्रेशर ग्रेडियंट कमी जाउची बोली कहले गैस रो ग्रेडियंट मध्ये कमी जाउतबो अमाउंट मध्ये कमी जाउतबो कमी जाउची निहाती 150 ml और 350 ml रे ये बाइफरकेट हेगिरी 350 ml ही हमर गैसेस एक्सचेंज रे इन्वॉल्व 350 ml ही हमर गैसेस एक्सचेंज रे इन्वॉल्व आउ बाकी 150 ml आउ बाकी 150 ml सी हमर कहा रे इन्वॉल्व रहउची से डेड स्पेस रे रहि जाउची सी आसेगिरी डेड स्पेस रे रहि जाउची हैला। तो ये जब कोन ऑप्शन नंबर डी इज वो करेक्ट आंसर हैला। डी इज वो करेक्ट आंसर। एडी आ गोटे मतलब पॉइंट मिस कर देले कोन ना ईआरवी और आरवी ईआरवी प्लस आरवी एडा मिसे रहउची एफ फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी और जोड़ा होगी एफआरसी बोली कह जाउची हैला एफआरसी बोली कह जाउची। तो ये गेला पूरा हमरो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज ऊपर पूरा कंटेंट ता जो प्रकार भी क्वेश्चन आसीबो जेमिति भी क्वेश्चन आसीबो आईवी आईसी ईआरवी टीआरवी ईआरवी टीवी आईआरवी आरवी टीएलसी बीसी आईएम एरा सब आईएस एबे समस्त तमाने करि परिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 inspiratory reserve volume refers to देखो एबे तो करि परिबो आई गेस maximum additional air inspired after forceful inspiration, air remaining inside the lungs after forceful expiration, volume exchanged during ordinary respiratory movements, maximum air expired following the tidal expiration. Beta, this is A. Subhashish. Maximum additional air inspired after normal inspiration. Beta है हमारा IRV बा inspirated reserve volume. जोड़ा गया हमारा 2500 रू 3000 ml जाए range पूछ. 2500 रू 3000 ml जाए range पूछ. Next, 16. Bronchial asthma is primarily characterized by fibrosis and destruction of alveolar walls permanently, inflammation and narrowing of bronchioles causing breathing difficulty, bacterial infection producing fluid-filled alveoli, or genetic deficiency of hemoglobin synthesis. The genetic deficiency of hemoglobin synthesis pathways. Inflammation and narrowing of bronchioles causing the breathing difficulty. Yes, 16 B. Now, A number कहाँ पे बोली होची? Allergy reactions पे बोली होची. Allergic reactions पे बोली होची. कौन से प्रकार एलर्जी द्वारा जब तमें इन्फेक्टेड हो जाइबो ताहले से केस रे आजमा हमर होची. अच्छा गोटे हमर बैक्टीरियल डिजीज मध्ये अछि. बैक्टीरियल डिजीज मध्ये अछि जोडा कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्रिएट करि पाछ. एरा कहला कोन दैट इज निमोनिया हैला. सेडाला निमोनिया एडा मध्ये गोटे प्रकार डिजीज ता जोडा कि हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होची. बाकी इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज. बैक्टीरियल डिजीज बोली कहले बैक्टीरिया द्वारा कॉज होत बनियाती. हाँ वॉइस इज इन भलो इन स्पाइसिस.
से टिके भल हैलाडू पुणी खराब हो जाउछि। अच्छा देखो निमोनिया हमर दीटा डिजीज दीटा बैक्टीरिया पई बोली हमर इन्फेक्टेड होई पारुछि बा कॉज होई पारुछि। सेडा हला गोटे हला स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी आ गोटे हला हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा है ना। अब जनरली ये कौन इन्फेक्ट करछि ना लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इट infects the lower respiratory tract है ना। माने alveoli को इन्फेक्ट करछि आ एडी म्यूकस फिल कर दोछि म्यूकस फिल्ड बा फ्लूइड फिल कर दोछि जा द्वारा होछि कोन ना गैसेस improper gaseous exchange improper gases exchange heବା जोगु hypoxia माने होची deficiency of oxygen in the body tissues and the body turns grayish blue body पूरा नेली पड़ी जाउची हैला काहेंगी ना deficiency हे जाउची oxygen रो proper tissues को हमर proper oxygen amount रे मिली पारुनी सेति में बोली हमर ए प्रकार प्रॉब्लम देखा जाउची। एडा गोटे बैक्टीरियल डिजीज आ गोटे सेमती गोटे वायरल डिजीज अछि जोड़ा की हैला कोन ना कॉमन कोल्ड and it is caused by rhinovirus सेति में बोली कॉमन कोल्ड को rhinititis बोली मतलब हुआ है rhinititis बोली मतलब हुआ है आउ rhinovirus for common cold it infects our lower pneumonia it infects our upper respiratory tract है ना। upper respiratory tract माने कौन इन्फेक्ट करछि nasal cavity pharynx larynx हैला सेति में बोली हमर ठंडा हेले nasal cavity नाक चौक हे जाए हैला म्यूकस बॉडी भरी जाए आ नाक चौक हे जाए pharynx जोड़ा कि हमर कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर सेइडा रे हमर इन्फेक्शन हेबा जोगु हमहु कथा कहबारे मते पेन हुए किछि खाइला बेलगु मते पेन हबो तापरे लैरिंग्स जोड़ा कि वॉइस बॉक्स बोली कहआ जाउछि लैरिंग्स टाइम मते हमर इन्फेक्शन ता वाइडन अप हे परिबो जोड़ा द्वारा कि हमर थ्रोट इन्फेक्शन को मते से कॉज कर हैला। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रोड्यूसिंग फ्लूइड फिल्ड एल्वियोली जो ए ऑप्शन रे देइछि एडा हि जो हमर कोन एडा हि जो हमर निमोनिया हैला। नेक्स्ट आसो क्वेश्चन नंबर 17 देखो पढ़े आसले से क्वेश्चन ना pneumonia is a respiratory disorder in which alveoli become inflamed and filled with fluid bronchiole permanently dilate without infection pleural membrane lose lubricating pleural fluid respiratory centers cease the impulse generation suddenly pneumonia रा हला हमर गोटे कोन ना respiratory disorder which is caused by bacteria आ को बैक्टीरिया कॉज करूची is streptococcus pneumoniae आउ hemophilus influenza है तो ये हैला कोन ना हमरा ऑप्शन नंबर ए alveoli become inflamed and filled with fluid हैला। हम alveoli जत्ते पतला हबो मेम्ब्रेन दा सते बेटर गैसेस एक्सचेंज हे परिबो तो एडी जदी हमर फ्लूइड फिल हे जिवो गैसेस एक्सचेंज बारे इंटरप्शन हबो हैला। ए टाइप रो हमर कंटेंट एडी देखा जाउछ। क्वेश्चन नंबर 18 cyanosis during respiratory insufficiency occurs because excessive oxygen saturation of arterial blood develops
Deoxygenated hemoglobin concentration increases significantly. Carbon dioxide is absent completely from the circulation. How? Platelet aggregation blocks the pulmonary capillary flow. Cyanosis. एडरा हम कौन हिमोग्लोबिन कंसंट्रेशन आमर डीऑक्सीजनेटेड हेगिरी हम से मानकर डीऑक्सीजनेशन आमर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाउची डीऑक्सीजनेटेड हेबाडा बॉडीडा हम सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाउची जा द्वारा कि कार्बन डाइऑक्साइड रो कंसंट्रेशन बॉडी रे बढ़ी जाउची H+ रो कंसंट्रेशन बॉडी रे बढ़ी जाउची एंड this is a condition of high level of toxicity जोड़ा रे कि body turns grayish blue. Next 19. Next चला कौन? Question number 19. Which statement correctly explains why carbon monoxide is highly dangerous? It destroys the alveolar epithelial cells by corrosive action. It binds with hemoglobin with high affinity, very high affinity, reducing the oxygen transport. It converts the bicarbonate ions irreversibly into carbonic acid. How? It stimulates excessive respiratory movements, causing alkalosis. कौन हो जाएगा ऑप्शन? बिकॉज आमर कार्बन मोनोक्साइड रे एफिनिटी रा सबुरो अधिका था कार्बन मोनोक्साइड रा एफिनिटी रा सबुरो अधिका था फॉर एनी अदर गैसेस फॉर द हीमोग्लोबिन हैला कार्बन मोनोक्साइड सबुरो अधिका रे बाइंड करबो तापर कार्बन डाइऑक्साइड तापर जाई ऑक्सीजन बाइंड हैला तापर जाई ऑक्सीजन बाइंड करबो एही प्रकार एफिनिटी देखबा जो हम कार्बन मोनोक्साइड पॉइजन इटा सबुरो अधिका कार्बन मोनोक्साइड हम सबुरो dangerous बोली आमे कहूचे इट binds with hemoglobin with very high affinity reducing the oxygen transport तो जदी आमे जते बेले सेहित में बोली जते बेले आमे बाहर कोसी गोटे माने कोन कहउछंती पोल्यूटेड जगह को जाउचे हैला बाहर कोनसी गोटे पोल्यूटेड जगह को जाउचे सेठी जते बेले कार्बन मोनोक्साइड रो कंसंट्रेशन अधिका थाउची ताले से जगह रे हमर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट थाउची दरकार पड़ले एमिति भी कहयो गले कार्बन मोनोक्साइड रो कंपैरिजन रे ऑक्सीजन रो कंसंट्रेशन सब अधिका थाउची फिर भी जेहेतु हीमोग्लोबिन रा एफिनिटी टुवर्ड्स द कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सेति में बोली से कार्बन डाइऑक्साइड से तो बेसी एक्टिवली बाइंड करे और ऑक्सीजन से तो करि पारेनी सेति में बोली हमको जो अनकॉन्शियसनेस ब्रेथलेसनेस फील हुए इट इज बिकॉज़ ऑफ दैट रीजन क्वेश्चन नंबर 20 during inspiration in the humans diaphragm relaxes and becomes dome shaped upward intrapulmonary pressure rises above the atmospheric pressure thoracic cavity volume increases due to diaphragmatic contraction. External intercostal muscles undergo complete relaxation. Option number question number 20. Question number 20. Inspiration है बेड़ू इंस्पिरेशन है बोली कहले हमर एयर इनहेल है एयर इनटेक हैला और एयर इनटेक हैला टाइम रे कोन होची ना हमर लंग रो वॉल्यूम बढ़ी जाउची लंग रो वॉल्यूम बढ़ी गले ताकू धरि कि थोरासिक कैविटी रो वॉल्यूम मध्ये बढ़ी जाउची थोरासिक कैविटी रो वॉल्यूम मध्ये बढ़ी जाउची हैला आ थोरासिक कैविटी रो वॉल्यूम बढ़ी गले डायफ्राग्राम ऊपर हमर कोन होची नसी हमर प्रेशर पकोजी एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच डायफ्राग्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाउची contracts and flattens फ्लैट हो जाउची हैला अच्छा तो एथि पई बोली हमर कोन होची ना पड़े वाला thoracic cavity volume increases due to diaphragmatic
contraction है डायफ्राग्राम टा कौन टा डायफ्राग्राम टा गोटे मस्कुलर स्ट्रक्चर टा which is कौन कहउछन एटा को गोटे मस्कुलर स्ट्रक्चर टा which is only it is a characteristic of mammal. It is a characteristic of mammal. केवल mammal मानकर ही diaphragm देखा जाउछ. आउ से muscles टा कोदर made up of diaphragm muscle is made up of phrenic muscles. Diaphragm muscle is made up of phrenic muscles. है ना? Question number 21. Which structure prevents the food from entering the trachea during swallowing? Glottis connecting the pharynx with esophagus. Epiglottis covering laryngeal opening temporarily. Uvula separating nasopharynx from oropharynx. Soft palate attached with tracheal cartilage. 21. B. Epiglottis. Yes. Epiglottis जोटा कि हमरो सी larynx पाखे गोटे opening रे हमरो temporarily present होछि larynx को temporarily cover करछि food intake कला आडू से कवर हो जाउछि food intake हला आडू wind pipe टा कवर हो जाउछि wind आसिला आडू food pipe टा कवर हो जाउछि हला तो ये गेला epiglottis आ epiglottis टा कोन एडा मध्ये हमर गोटे cartilaginous structure टा cartilaginous structure टा made up of 9 hyaline cartilages. 9 hyaline cartilages. है not a hyaline cartilage basically हमारा एटा form होच. ओडा epiglottis. 22. Surfactant deficiency in premature infant may lead to excessive dilation of the bronchial lumen permanently, collapse of alveoli causing respiratory distress, increased carbon dioxide transport as bicarbonate, hyperventilation due to medullary overstimulation. It will cause it will cause collapse of alveoli causing respiratory distress. है alveoli जो हमर जो सिंपल एपिथेलियम सेल्स गुडा कथिला लाइन हे रे हला किछि सेल कोन हबो किछि सेल कोन हबो से हमर ट्रांसफॉर्म हे जिवो इनटू सर्फेक्टेंट हला ट्रांसफॉर्म हे जिवो इनटू सर्फेक्टेंट जोडा की हमर कोन करिवो इट हेल्प्स टू रिड्यूस सरफेस टेंशन हला आउ किछि सेल मॉडिफाई हे जाय हमर कोथरे ना डस्ट सेल्स रे अब ये डस्ट सेल्स उडा कोन these are the macrophages of the lungs. These are the macrophages of the lungs. These are the macrophages of the lungs. अच्छा ठीक अच्छे हेगला तो ये हेगला हमर कोन कोलैप्स ऑफ alveoli causing the respiratory distress. Question number 23. Hemoglobin shows maximum affinity for oxygen when partial pressure of oxygen is high and carbon dioxide is low. Carbon dioxide concentration rises sharply in active tissues. Blood pH decreases significantly due to lactic acid accumulation. How? Body temperature increases during vigorous muscle activity. और answer A.
यस वेरी नाइस हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ପାଇଁ ବୋଲି मैक्सिमम एफिनिटी केतले देखेबो जेतले ऑक्सीजन रो पार्शियल प्रेशर अधिक देबो कार्बन डाइऑक्साइड अपेक्षा हैला ऑक्सीजन रो पार्शियल प्रेशर अधिक देबो कार्बन डाइऑक्साइड अपेक्षा सेतबेले से तार मैक्सिमम एफिनिटी देखेबो ऑक्सीजन पे नेक्स्ट एडा कलो a mountaineer ascending rapidly to high altitude experiences shortness of breath and increased ventilation. Breath shortness माने breathe करियार problem बा breathlessness बोली कहवा या फिर increased ventilation माने बहुत जोर rapidly inspire करवा rapidly breathing करवा increased ventilation बोली कहा जाउछ. This physiological response is primarily due to which of the following changes that shifts the oxygen dissociation curve. कौन करूची decrease in temperature, decrease in CO2 concentration, and increase in blood pH, causing the left shift. Increase in 2,3 BPG concentration, decreased pH, and increased body temperature, causing the right shift. Decrease in 2,3 BPH, increased hemoglobin affinity for oxygen, and reduced metabolic rate, causing the left shift. Increased alveolar oxygen tension, decreased ventilation rate, and reduced erythropoiesis, causing the right shift. कौन बेटा भाई बोलिए आंसर एडी जीव कौन ऑप्शन नंबर 2 हे जीव देखो बॉडी टेम्परेचर बढ़िबा जोगु हैला इंक्रीज वेंटिलेशन होची आउ हमर ऑक्सीजन पई बोली एफिनिटी टा कमी कमी की जाउची ऑक्सीजन पई एफिनिटी कमी कमी की गला बोली कहले हमर कर्व टा को प्रकार जेबो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व टा को प्रकार जेबो ए प्रकार नॉर्मल ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व टा एति थिला सेबे एमिति जेबो हैला एडा एबे एमिति जेबो ठीक अछि जोडा कि राइट शिफ्ट कॉज करेबो बोली आ राइट शिफ्ट कॉज करेला बोली कहले को प्रकार इफेक्ट देखौची बोर इफेक्ट देखौची आ एडा हमर का ऊपर काम करूची ना टिश्यूज ऊपर काम ऑप्शन नंबर बी हे जिवो करेक्ट आंसर वेरी नाइस भवानी हैला बी हे जिवो करेक्ट आंसर 2,3 बीपीजी रो माने कोन इट इज 2,3 bis phosphoglycerate 2,3 bis phosphoglycerate डन अच्छा एरा केते थिला क्वेश्चन नंबर 24 एबा सो क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25 in aquatic organisms like fish the efficiency of gas exchange across gills is significantly higher than that of the lungs in the terrestrial animals से कोची कि गिल्स रे रेस्पिरेशन करले अधिका सिग्निफिकेंटली हमर बेटर गैसेस एक्सचेंज हे परची देन दैट ऑफ द लंग्स आ ता माने गिल्स तो हमर प्रेजेंट अछि सब एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स मानक पाखरे ता माने से माने बेटर हमर एफिशिएंसी देखि परची गैसेस एक्सचेंज रे देन अस एज ह्यूमंस who respire in lungs being terrestrial animals amar efficiency gases efficiency टिके कम अछि बोली कहै जाय why so एटा कोन ठीक की yes obviously it is correct why काहे की देखियो ऑप्शंस देखो ऑप्शन नंबर ए water has higher oxygen content than air and diffusion is faster in the water medium सेमिति किछि नै water रे oxygen concentration सेमिति अधिका न थाए सेमिति तो किछि अधिका न थाए water रे oxygen रो concentration air रे तो हमरा अधिका concentration थाए counter current flow mechanism maintains a continuous diffusion gradient along the entire gill surface. Gills are composed of thick epithelial layers that prevent water loss and enhance the oxygen binding. Thick epithelial layer नथाए gills रो हला ना gills रो thick epithelial layer थिबो बोली कहले समाने gases exchange करि पारिबिनी समाने करि पारिबिनी हला नाइ हबानी सी हबनी next oxygen diffuses randomly in gills due to turbulent water flow increasing the surface contact नाइ ना सेरा मतो रैंडमली डिफ्यूज करिवनी ठीक हमर कोन होची गिल्स रे जतले रेस्पिरेशन होची ना सेते बडे हमर बहुत गुडा अन्य पार्ट्स वाला मते इन्वॉल्व थाउची छोडा कि आप सिंगल सर्कुलेशन मैकेनिज्म रे देखले हम जानि फिशेस मन कर हैला हमर ऑप्शन नंबर बी हे जो करेक्ट आंसर काउंटर करंट फ्लो मैकेनिज्म मेंटेन्स a continuous diffusion gradient along the entire gill surface हैला along the entire gill surface question number 26 इडी आसीवाला बोली हमने ना हां यस लीस्ट इफेक्टिव रु मोस्ट इफेक्टिव गैसेस एक्सचेंज सिस्टम तो हमें मार्क करिवा स्किन ऑफ अर्थवर्म
tracheal system of insect, alveolar lung of the mammal, fish gills. Tracheal system of insect, skin of amphibians, fish gills, mammalian alveoli. Skin of amphibians, tracheal system of insect, fish gills, mammalian alveoli. Fish gills, skin of amphibian, tracheal system of insect, mammalian alveoli. कौन होगा? ହେଲା ଅଧିକା efficient ରୁ କମ efficient ନା ସେ କଣ ପଚାରିଛି least to most ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେ ପଚାରିଛି least to most efficient ସବୁଠୁ କମ efficiency gases exchange ର କାହାର ସବୁଠୁ ଅଧିକା efficiency gases exchange ର କାହାର ଦେଖ ସବୁଠୁ କମ efficiency ବୋଲି କହିଲେ earthworm ହବ ନା earthworm ହବ ନା earthworm କୋ phylum କୁ belong କରୁଛି earthworm belong କରୁଛି annelida phylum ହେଲା तार जो स्किन रे रेस्पिरेशन करछन तार एफिशिएंसी सब कम तापर इंसेक्ट्स मानकर ट्रैकियल सिस्टम आस टिके बेटर हो जाउछ काहे ना यार लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रे मध्य टिके बेटर अछि ऑर्थोपोडा फाइलम को बिलोंग करछ तापर असले अल्वेओलर लंग्स ऑफ मैमल्स तापर असले फिश गिल्स ऑप्शन नंबर ए हिज ऑप्शन नंबर ए हिज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 The respiratory membrane in human lung is extremely thin to facilitate the rapid diffusion of gases. This membrane is primarily composed of पूरा discussion कर रिसर्च already हमें आगुरु है ना respiratory membrane विषय रे कौन ना A squamous epithelium of alveoli, basement membrane in endothelial lining of the pulmonary capillaries, cuboidal epithelium of bronchioles and thick connective tissue layers of the alveolar ducts, keratinized epithelial cells and smooth muscle fibers surrounding the bronchi. Stratified epithelial lining of alveoli and thick collagen fibers preventing the collapse. कौन है जीवो 27 ना A. Yes. Squamous epithelium of the alveoli, basement membrane and endothelial lining of the pulmonary capillaries. एवढा को सब मिसिरी हमर कोन होची respiratory membrane होची respiratory membrane जते moist रहइबो जते पतला रहइबो जते vascular रहइबो vascularized माने blood vessels रे richly supply हेगी रहइबो सेते बेटर हमर हे परिबो gases exchange सेते बेटर हे परिबो gases exchange हैला आ एडा को हमरो respiratory membrane बोली कहवा गला and it is less than 1 mm it should be less than 1 mm जत्ते पतला हबो सेते भलो जत्ते पतला हबो सेते भलो क्वेश्चन नंबर 28 देख लो The sigmoid shape of the oxygen dissociation curve of hemoglobin is mainly due to random binding of the oxygen molecules to iron without structural change in hemoglobin, cooperative binding where binding of one oxygen molecule increases affinity for subsequent oxygen molecules, linear binding of oxygen with constant affinity in all the 4 heme groups. Now, oxygen binding only at high partial pressure due to irreversible hemoglobin oxygenation. देखो हमर ऑक्सीजन बाइंडिंग दा हीमोग्लोबिन संगे इरिवर्सिबल नुहे रिवर्सिबली से माने बाइंड करो इतो ऑप्शन नंबर डी तो कटि गला लीनियर बाइंडिंग तो हुएनी लीनियर बाइंडिंग हेता ना बोली करे तो ग्राफ हमर स्ट्रेट लाइन पड़े हैला किंतु हमर सेगमेंट शेप रो ग्राफ जो आसुची काहे आसुची काहे ना लीनियर बाइंडिंग होनी किछि किछि जगह रे हमर बाइंडिंग दा स्लो ही जाउची बंद ही जाउची बा किछि किछि जगह रे हमर बाइंडिंग दा एफिशिएंटली हे पारुनी सेति मैं बोली हमर ग्राफ ता sigmoid shape अछि random binding of oxygen molecule to iron without structural change in hemoglobin nahi randomly bind हुएनी there are certain conformational changes that occurs तापरे जाई गे हमर oxygen binding होउछ cooperative binding where binding of one oxygen molecule increases the affinity for subsequent oxygen molecules yes this will be the correct option cooperative binding होउछ हैला धीरे धीरे बाइंडिंग होउछ नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 29 in insects tracheal respiratory system is highly efficient because oxygen is transported through hemolymph directly to tissue using respiratory pigment air filled tube directly deliver oxygen to tissues bypassing the circulatory fluid entirely gas exchange occurs through diffusion across the moist body surface into the blood plasma trachea contain hemoglobin which binds and transports oxygen to the cells
এটা কোন হইছো it is air filled tubes air filled tube gudago yes Payal very nice air filled tube directly deliver the oxygen to the tissues by passing the circulatory fluid entirely ସେଇଥି ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ କି efficiently ଆମର respiration କରିପାରୁଛି କାହିଁକି ନା ଏ bypass କରିକି oxygen କୁ supply କରି ଦଉଛି tissues ହେଲା there are certain tubes air filled tubes जोड़ाକୁ tracheal tube ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା spiracles ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ହେଲା spiracles ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସେଇଟା କଣ କହୁଛି ସେ bypass କରିକିରି ଆମର tissues ଗୁଡାକୁ ସେ fluid release करे दोछ ऑक्सीजन नेगरी पहुंचे दोछ 13 a shift of the oxygen dissociation curve to the right is actively exercising muscle is advantageous because increases the oxygen affinity of hemoglobin to enhance the storage in blood decreases oxygen release to maintain stable oxygen level in the blood plasma promotes oxygen unloading in the tissues where metabolic demand is high and prevent carbon dioxide accumulation by increasing the binding of oxygen to the hemoglobin राइट शिफ्ट हेले कोन होची राइट शिफ्ट हेले कोन होची ये हेला हमर नॉर्मल ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ये जतले राइट शिफ्ट होची ताले ए टाइप रो है ना ये हेला PO2 तापर ये हेला कोन ना एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन हैला ए टाइप रो होची ना ए टाइप रो होची अच्छा तमाने एटा राइट शिफ्ट हला बोली कहले हमर ऑक्सीजन पे बोली एफिनिटी कमिला ऑक्सीजन कोन हबो अनलोडिंग हि होतबो आ एटा कोडी होची एटा को प्रकार इफेक्ट बोर इफेक्ट हला माने इन केस ऑफ इंक्रीज इन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ हमर ऑक्सीजन अनलोडिंग हमर आरंभ हो जाउची ऑक्सीजन अनलोडिंग हे गिरी टिश्यूज गुडा को ऑक्सीजन सप्लाई करछ हला टिश्यूज गुडा को ऑक्सीजन सप्लाई करछ आ बोर इफेक्ट हमर टिश्यूज रे होची टिश्यूज रे हो जा बोर इफेक्ट जो हमर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ता राइट शिफ्ट आड़ को मुआई जाउछ राइट शिफ्ट आड़ को मुआई जाउछ ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर सी इज द करेक्ट डन नेक्स्ट 31 the counter current mechanism in fish gills ensures maximum oxygen uptake because water and blood flow in opposite direction maintaining a diffusion gradient throughout the entire length blood and water flow in the same direction, reducing oxygen loss to the environment. Oxygen concentration become equal in blood and water at all points of the gill surface. Diffusion stops once equilibrium is reached at midpoint of the gill lamella. हमें कौन डिस्कशन करथिले जे गिल्स मानकर अधिका एफिशिएंसी अछि बा अधिका रेस्पिरेटरी सरफेस अधिका अछि से मानकर गैसेस एक्सचेंज रो कैपेबिलिटी व्हाई बिकॉज़ से माने काउंटर करेंट मैकेनिज्म फॉलो करी काउंटर करेंट मैकेनिज्म फॉलो करके गैसेस एक्सचेंज करके डिफ्यूजन करछथि तो वाटर एंड ब्लड फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस मेंटेनिंग अ डिफ्यूजन ग्रेडियंट थ्रूआउट द एंटायर लेंथ हैला नेक्स्ट क्वेश्चन 32 which of the following statement correctly distinguishes respiration in amphibian compared to the reptiles देखो amphibian रो respiration कोथरे होची gills रे reptile रो respiration कोडी होची lungs रे हैला तो एबे how is it different from each other सेडा को हमें a point रे check करिवा हैला तो is the answer कौन हबो amphibians rely exclusively on lungs whereas reptile depend on cutaneous respiration ना एटा तो उल्टा ही वाला amphibians use both skin and lungs for respiration while reptile rely mainly on lungs with keratinized skin lining cutaneous exchange amphibians lack pulmonary structures while reptile possess gills during the adult stage both amphibian and reptile use tracheal system for efficient oxygen transport देखो both amphibian और reptile tracheal system तो यूज करना दी tracheal system insects माने यूज करछन एटा तो भूले वाला amphibian lack pulmonary structures while reptile possess gills during the adult stage lack pulmonary structures ठीक अछि to a certain extent reptile possess gills during the adult stage केबे नहीं हैला amphibian use both skin and lungs for respiration yes ठीक अछि ये पॉइंट ता while reptile rely mainly on the lungs with keratinized skin limiting the cutaneous exchange एटा इज करेक्ट हैला amphibians rely exclusively on lungs whereas reptile एटा हैला और not only amphibians skin और lungs ପାଇଁ बोली खाली नुहे amphibians माने skin और lungs ପାଇଁ बोली खाली नुहे
स्किन रे भी रेस्पायर करंती जोड़ा को कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोली कहा जाउची है ना आउ लंग्स एंड बकोफेरिंग्स रे मध्य लंग्स एंड बकोफेरिंग्स रे मध्य रेस्पिरेशन करंती जोड़ा रे कि समानकर अधिक रो अधिक एटीपी रो खर्च है एटीपी रो खर्च होची जते बेले से माने एस्टिवेशन स्टेट रे बा हाइबरनेशन स्टेट रे थांती सेते बेले दे गो फॉर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हला जा द्वारा कि एटीपी रे कम खर्च हो नेक्स्ट 33 ए विषय तो हमें पूरा ऑलरेडी पूरा करि सारचे हला द बोर इफेक्ट इन हीमोग्लोबिन फिजियोलॉजी डिस्क्राइब्स increased oxygen affinity of hemoglobin in acidic condition enhancing the oxygen uptake in the lungs, decreased oxygen affinity of hemoglobin in presence of high CO2 and low pH promoting the oxygen release in tissues, binding of carbon monoxide to hemoglobin increasing oxygen transport efficiency, complete inhibition of oxygen binding when carbon dioxide concentration decreases in the alveoli. It is कौन ऑक्सीजन रो एफिनिटी जतरे कमी जाउछ हैला ऑक्सीजन एफिनिटी कमी जाउछ ऑक्सीजन एफिनिटी केतरे कमुछ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन हाई हे गेले एसिडिटी बढ़ी गले H+ कंसंट्रेशन हाई हे गेले H+ कंसंट्रेशन हाई हेला बोली गले pH कमी जिवो pH कमी गला बोली गले एनवायरनमेंट एसिडिक हे गला बोली गले कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ी गला कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी गला बोली गले हाई हीमोग्लोबिन एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड टाइम बोली बढ़ी जाउछ आ ऑक्सीजन तापे टिश्यूज रो अनलोड हेबा आरंभ जाउछ हैला ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर कलइडा कौन अछि A chronic smoker of 45 years reports progressive shortness of breath. Clinical examination shows barrel-shaped chest and reduced surface area for gases exchange. Imaging reveals destruction of alveolar walls. What is the primary pathological change responsible for reduced oxygen diffusion? First, thickening of alveolar epithelium due to excessive surfactant accumulation, permanent enlargement of the bronchioles due to excessive mucus secretion, breakdown of alveolar wall leading to decreased surface area and loss of elastic coil, increased ciliary movement causing rapid expulsion of air from the lungs. ହେଲା तो ए केस रे हमर करेक्ट आंसर कोन हे जिवो ब्रेकडाउन ऑफ द alveolar wall गुडा ब्रेकडाउन हे गिरी सरफेस एरिया रा कमे दोची जा द्वारा कि हमर इलास्टिसिटी रा मेंटेन होनी एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच हम गैसेस एक्सचेंज रा प्रॉपर्ली हे पानी हैला गैसेस एक्सचेंज प्रॉपर्ली हे पानी आ स्मोकिंग करले जो डिजीज रा कॉज होची सेडा कोला एम्फाइजेमा आ एटा को ट्रीट करिया पई बोली हमें बायोटेक्नोलॉजी रो हेल्प रे हैला बायोटेक्नोलॉजी रो हेल्प रे हमें कोन करछे वी हैव gotten some protein which is protein हमें एक्सट्रैक्ट करेगी हमें एम्फाइजेमा को ट्रीट करिया को रिलीज करछे सेडा हला कोन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन हैला अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ठीक अछि हां बस हां इट्स ओके बस next 35 a 60-year-old patient presents with high fever chest pain productive cough and difficulty breathing. Chest X-ray shows consolidation of alveoli filled with fluid and pus due to bacterial infection. What directly causes the impaired gases exchange in this condition? First, accumulation of inflammatory exudate in alveoli replacing air-filled spaces. Excess oxygen diffusion into blood causing oxidative stress in tissues. Permanent dilation of bronchioles leading to increased airflow resistance, excess surfactant secretion causing the collapse of the respiratory bronchioles. So, AD surfactant ऊपर किसी फरक पड़े नहीं. Dilation of bronchioles हबनी, dilation of bronchioles हबनी बोली कर dilation of bronchiole ले तो blood flow डा increase देगला, air flow डा increase देगला, better efficiency है जो एडा हबनी, हैला. Excessive oxygen diffusion into blood causing oxidative stress in tissue. Oxygen diffusion तो हबनी सही तो मैं बोली तो difficulty in shortness. Difficulty in breath है shortness in breath है cough पहले हमारा oxygen diffusion properly ही परिबनी accumulation of inflammatory exudate in alveoli inflammatory exudate माने होची the material which can cause inflammation है the material which can cause inflammation in alveoli replacing the air filled spaces yes हमारा alveoli रे जो air हेगी present था होची
10 मिनट एयर हेगी प्रेजेंट थाउची सेडा हमर कोन होची ना सेडा हमर कोन होची ना एल्वियोली रे हमर इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट उडागो सब एक्युमुलेट हे जाउची आ एयर फिल्ड स्पेसेस उडागो ता द्वारा हमर कोन होची रिप्लेस हे जाउची क्वेश्चन नंबर 36 a patient shows chronic cough weight loss and blood streaked sputum infection is caused by Mycobacterium tuberculosis forming granulomas in lung tissues. What is the main effect of granuloma formation on respiratory function? First, increased alveolar surface area leading to enhanced oxygen diffusion, destruction and fibrosis of the lung tissues, reducing effective gas exchange area, excessive production of the surfactant improving the lung compliance, increased hemoglobin synthesis leading to improved oxygen transport. Both the obvious options है obvious option हाँ सेटा ए हबो वर्ष है कौन हबो obvious options ना option number B destruction and fibrosis of the lung tissue reducing the effective gas exchange area effectively gases exchange ए पारुनी है एक effective gases exchange को भाई पारुनी because हमारा lung tissue उड़ा करे fibrosis ही आउची माने fibers accumulation ही है जी किसी ना किसी चीज का accumulation ही है जी जा द्वारा की alveolar wall उड़ा हमारा सब defective है जी 37. A minor working for 20 years in Stone Quarry developed progressive breathlessness. Imaging shows fibrinotic nodules in lungs due to inhaled silica particles. Which process best explains lung impairment? First option, deposition of silica induces macrophage activation leading to fibrosis and reduced lung elasticity. Excess oxygen binding to hemoglobin reduces carbon dioxide transport efficiency. Increased alveolar ventilation leading to hyperoxygenation of blood. Expansion of alveolar sacs due to loss of surfactant secretion. Combo 37 na A. Deposition of the silica induces macrophage. देखो macrophages of the lungs कौन dust cells जेतबले कौन से foreign particle enter करिला बोली कहले हमर निहाती macrophages गुडा सब activate है बेसिक अब macrophages गुडा activate है कि silica को मारिवा चक्कर रे सेमानकर मध्ये deposition है बाहर हो जाउची जा द्वारा कि lung रो alveoli रो elasticity रा कमी जाउची अब इलास्टिसिटी कमी गले हमर गैसेस एक्सचेंज टा मध्ये कमी जिवो हैला गैसेस एक्सचेंज टा मध्ये कमी जिवो अब एरा गोटे प्रकार हमर ऑक्युपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर बोली कहबा ऑक्युपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर बोली कहबा हैला अब ए कंडीशन टा को सिलिकोसिस बोली कहवा जाउछ सिलिकोसिस बोली कहवा जाउछ नेक्स्ट 38 person exposed to smoke in a closed room shows dizziness and hypoxia despite normal oxygen levels in the air. What is the primary mechanism of toxicity? First, carbon monoxide binds irreversibly to hemoglobin, reducing oxygen transport capacity. Carbon monoxide destroys the alveolar epithelium, causing the permanent lung collapse. Carbon monoxide increases oxygen unloading in tissues, leading to oxidative stress. Carbon monoxide enhances the diffusion of oxygen, causing the respiratory alkaloids. कौन हबो B destroy करूची जे केंदी करूची डायरेक्टली थोड़ी destroy करची हमर alveolar epithelium हैला B हबोनी कार्बन मोनोऑक्साइड irreversibly bind कर जाउची hemoglobin हैला तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी कमी जाउची हम जति क्लोज रूम गोटे रखिबा बोली कहले सेरे ऑक्सीजन लेवल वैक्यूम हो जाउची ना माने ऑक्सीजन लेवल कम हो जाउची ना से जगह वैक्यूम तो नुहे टोटली ऑक्सीजन लेवल कम हो जाउची कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल अधिक हो जाउची काई कार्बन मोनोऑक्साइड अधिक हो जाउची बोली कहले कार्बन मोनोऑक्साइड कथा काई कहले काई ना स्मोक कथा उठिची हैला स्मोक कथा उठिची सेही में बोली कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल एडी अधिक हो जाउची आ कार्बन मोनोऑक्साइड ता affinity for hemoglobin is much greater than carbon dioxide or oxygen. तो सेति में बोली सी हमर hemoglobin संगे irreversible binding कर दोछि आउ जा द्वारा कि ऑक्सीजन बाइंडिंग रे प्रॉब्लम होछ आ ऑक्सीजन बाइंडिंग ता हमर रिजल्ट कोछि कोन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हमर कम जाउछि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी कम जाउछि क्वेश्चन नंबर 39 A shipyard worker develops progressive dyspnea after long-term exposure to asbestos fibers. What is the major pathological out? Acute bronchospasm due to allergic reaction in bronchioles,
pulmonary fibrosis leading to decreased lung compliance and impaired gas exchange, excessive surfactant production causing alveolar overexpansion, increased diffusion capacity due to stimulation of alveolar regeneration. कौन हम increased diffusion तो हबनी diffusion तो हमर increased हबनी हैला surfactant increase मध्य हबनी हैला pulmonary fibrosis leading to decreased lung compliance and impaired gas exchange yes हैला एडा ही परिबा acute bronchospasm due to allergic reaction in the bronchial acute हबनी हैला asbestos fiber हमर contact रे आसी तो acute bronchospasm हबनी हबो बोली कहले से परमानेंटली हमर डैमेज करि परिबो नहले से लॉन्ग टर्म पई बोली हमर रही परिबो हैला अच्छा आ ए कंडीशन दा कोन कहै जाउ छी asbestosis similarly आ गोटे मते सेमि रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रो कंडीशन दे अछि चारकोलोसिस एरा जतले चारकोल रो कांटेक्ट रे आसी चारकोल डस्ट रो कांटेक्ट रे आसीबो सेते बेले एटा होछ देन next question number 40 during microscopic examination of lung tissue a student identifies terminal bronchiole branching into respiratory bronchiole which further open into alveolar duct and finally into alveolar sacs composed of numerous alveoli. This structural feature is most directly responsible for maximizing the gas exchange efficiency. First, thick cartilaginous ring supporting bronchi and preventing collapse, high folded alveolar walls, highly folded alveolar walls with extensive capillary network increasing the surface area, presence of mucus gland in the alveoli for trapping the dust particles, a smooth muscle hypertrophy in alveolar duct enhancing the air pressure. See पचाची कि हमरो alveoli रे माने gases exchange रो हमरो maximum gases exchange कम पई बोली परबो एते कि बस किछि नै खाली स्टोरी लिखाई छी केमिति हमरो लंग टा गोटे पर गोटे उड़ी जाउ से लिखाई छी मेन क्वेश्चन हला एडा ओडा हम डायरेक्टली रिस्पांसिबल फॉर मैक्सिमाइजिंग द गैस एक्सचेंज एफिशिएंसी हाई सरफेस एरिया जते अधिक सरफेस एरिया हबो जते alveoli vascularized हबो जते हाईली फोल्डेड रही गिरी हमर सरफेस एरिया बढ़ेबो सेते बेटर गैसेस एक्सचेंज हे परिबो हला ऑप्शन नंबर बी इज तृप्ति यस नेक्स्ट 41 a researcher examines the branching pattern of human respiratory tract and notes that bronchioles lack cartilage but contain smooth muscles. What is the functional implication of this structural feature? हाँ ब्रोंकियोल्स रे हमरा कार्टिलेज नथाय ट्रैकिया प्राइमरी ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रोंकाई एउडा करे थाउची हैला एउडा करे थाउची कार्टिलेज बट लास्ट को आसला बेले हम रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स बेले जोडा रे कि हमरा alveoli अटैच हेगिरी थाउची सेडा आसला बेले हमरा ब्रोंकाई सेडा रे कार्टिलेज नथाउची सेडा स्मूथ मसल्स रे थाउची काहेकि bronchioles remain rigid to maintain constant airflow resistance. Bronchioles can actively regulate airflow through constriction and dilation. Bronchioles are incapable of changing diameter during inspiration, so during respiration. Bronchioles function primarily in mucus secretion rather than air conduction. Eda habani, eda to habani. Ela bronchiole remain rigid habani. Rigid thi thanta boli ko to cartilage present. Cartilage not thai. Ela tahle option number B is. Option number B is. They actively regulate airflow through constriction and dilation. 42. A student studying lung physiology observes that alveoli are closely associated with dense network of pulmonary capillaries, which is the most important reason for this structural association. Amara alveoli would have densely supply thanti blood vessels. से मैं तो कहली कि जत्ते better alveoli amara vascularized हबो सेते better efficiently amara gas exchange हे परिबो. So to provide structural rigidity to prevent the collapse, alveolar collapse, 9. To increase the rate of gas exchange by reducing diffusion distance between the air and blood, maybe our option देखिए to increase production of carbon dioxide in the alveolar wall 9 to prevent entry of pathogen into the respiratory tract ना हैला option number B इजिबो gas exchange टा increase करिबो जत्ते better हमर capillary जाई दिबो सत्ते better हमर air flow हे परिबो सत्ते better हमर distance जते कम हबो सत्ते better हमर gas exchange हे परिबो to increase the rate of gas exchange by reducing the diffusion distance between the air and blood. 43. In a pathological condition, destruction of alveolar septa is observed, leading to formation of larger air spaces with reduced surface area. Which lung disease best corresponds to this structural change? Alveolar septa गुड़ाक सब डैमेज हो जाउची, large air space गुड़ाक प्रोड्यूस हो जाउची और large air space हे गला बोली कहले surface area मध्ये कमी गला surface area मध्ये कमी गला और surface area कमी गला बोली कहले हमर gas exchange properly हेई परिबो
gases exchange properly हेई परिबनी तो एई कंडीशन डा को जगह रे देखा जाउची बी यस हला कंडीशन होची एम्फाइजम आ एडा हमर सिगरेट स्मोकिंग जो होची आउ एडा को ट्रीट करिया पई बोली हमें गोटे बायोटेक्नोलॉजिकली गोटे मेडिसिन दे बा प्रोटीन ह्यूमन प्रोटीन डिराइव करछि सेडा हला अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन alpha 1 antitrypsin 44 a diagram of the human respiratory system shows progressive branching of trachea primary bronchi secondary bronchi tertiary bronchi bronchioles alveoli which structural trend correctly observed along this pathway increase in cartilage and decrease in epithelial thickness decrease in cartilage increase in surface area for diffusion increase in alveolar number with complete loss of epithelial lining constant diameter and uniform wall thickness throughout ना हमर ब्रांचिंग हे गले हमर वॉल थिकनेस टा भी कमी कमी जाउछ तो एटा तो हबनी कांस्टेंट रहबनी डायमीटर इंक्रीज इन alveolar membrane with complete loss of epithelial lining होनी decrease in cartilage and increase in surface area for diffusion ठीक अछि increase in cartilage and decrease in epithelial thickness है ना 44 टा B next 45 a 20-year-old student undergoes spirometry testing. The graph shows that after a normal tidal expiration, the individual is able to forcibly expire additional air, but still some air remain in the lung that cannot be expelled even with maximum effort. अब एडी का कथा कह जाय छी एडी हमर रेसिडुअल वॉल्यूम कथा कह जाय छी कि फोर्सफुल एक्सपिरेशन हला परे मध्य हमें एति की वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल आउट करि पाउनी जोडा कि 1100 रु 1200 ml जाय हमर रेंज करूची which of the following correctly identifies the air remaining and its physiological significance obviously कहि देली एडी ना residual volume preventing the lung collapse and maintaining the continuous gas exchange है ना continuous gas exchange B 46 a trained athlete shows significantly higher tidal volume and increased vital capacity compared to a sedentary individual however their residual volume remains nearly unchanged which explanation best accounts for this physiological adaptation कौन होगा enlargement of alveoli leading to increased residual air storage strengthening of respiratory muscles improving inspiratory and expiratory reserve volumes reduction in lung elasticity improving air trapping efficiency now decrease in total lung compliance increasing the dead space ventilation एड़ा सब किछ होबनी हला strengthening the respiratory muscle improving the inspiratory and expiratory volume reserve volumes है ना option number B 47 at high altitude reduced oxygen partial pressure triggers physiological adaptation over time which adaptation helps compensate for reduced PO2 काहे की partial pressure of oxygen ता कमी जाउछ compensate करिया कोन केमिति compensate कर परिया decreased RBC count reducing blood viscosity, increased erythropoietin secretion, increasing RBC production, decreased hemoglobin concentration, improving oxygen unloading, reduced ventilation rate to conserve the carbon dioxide. कौन B pyrethropy ठीक अछि increased erythropoietin हमर कोन करछि erythropoiesis करोछि किडनी रो रिलीज होछि जो increasing the RBC production है ना increasing the RBC production 48 during inspiration thoracic volume increases leading to changes in lung pressure and airflow how does this relate to partial pressure changes in the alveoli first increasing alveolar pressure draws air into the lungs decrease in alveolar pressure allows atmospheric air or higher partial pressure to enter the lungs partial pressure of oxygen decreases externally causing air inflow carbon dioxide partial pressure increases in atmosphere during the inspiration correct answer is option number
बी एरिथ्रोसाइट्स माने तो आरबीसी बट एरिथ्रोपोइटिन दा कोन एरिथ्रोपोइटिन दा होचे से हार्मोन दा जोटा कि किडनी रो प्रोड्यूस होची एरिथ्रोपोइसिस करेबा पई हैला एरिथ्रोपोइसिस करेबा पई बोली एरिथ्रोपोइसिस होची द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीस आ आरबीसी रो फॉर्मेशन दा बोन मैरो रे हैला किंतु बोन मैरो रे आरबीसी फॉर्मेशन करेबा पई बोली जो हार्मोन दा दरकार से हैला एरिथ्रोपोइटिन हैला 47 48 decrease in alveolar pressure allows the atmospheric air or higher pressure to enter to the lungs है ना 48 टा B 49 in metabolically active tissues like skeletal muscles during exercise oxygen is rapidly consumed है ना skeletal muscle रे जदि हम exercise करले कि कोन से प्रकार अधिक active metabolism show करूचे ताहले हमर oxygen गुडा rapidly consume हो why so because which change in partial pressure is primarily responsible for oxygen diffusion from body blood into tissue कौन अब ऑप्शन नंबर 49 क्वेश्चन नंबर 49 एडा अब ऑप्शन नंबर बी हां बी lower partial pressure of oxygen in tissue compared to the arterial blood हैला नहीं lower partial pressure of oxygen in tissue compared to the arterial blood next 50 a gas mixture contains oxygen nitrogen and carbon dioxide the total atmospheric pressure is 760 mmHg oxygen contribute 21% of the mixture what is the approximate partial pressure of the oxygen एडा मध्ये हमें कैलकुलेट करिया सिखितिले partial pressure केमिति करिबा कैलकुलेट partial pressure माने होची the pressure of individual gas in a mixture of gases in a mixture of gases तो हमर एटमॉस्फेयर बहुत प्रकार गैस अछि से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे देला 760 mmHg ऑक्सीजन 21% रे प्रेजेंट अछि तो 21% रे हमर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस केते रहइबो ऑक्सीजन रे पार्शियल प्रेशर एमटी कैलकुलेट करा अब 21% इनटू 760 mmHg जोटा कि हमर 21/100 इनटू 760 mmHg 159 पॉइंट रे केते आंसर आसबो जोडा भी हम राउंड ऑफ करके 159 mmHg बोली कर दोछ एडा एटमॉस्फेयर रे ऑक्सीजन रे पार्शियल प्रेशर 159 mmHg हेज हैला 160 देछि एडी 159 हमर कंसीडर कोचे 159.6 देछि ना 159.6 देछि तो राउंड ऑफ करके 160 कर दोछ एडे 160 हबो 159 हमर रेंज रे हमें मानुछ हैला सो यस थैंक यू एवरीवन Thank you everyone. That's it for today. I hope ajra class tomana pai boli helpful heitimo. See you next time. Ame puni आउ गोटे किछटा क्वेश्चंस रे नेक्स्ट क्लास रे जॉइन करिवा. Thank you so much everyone. जय जगन्नाथ.